So fill your plate and fill your drink and fill this house with family, the kind of love that all these years can't wash away. Cause the older that I get, I see that life is short and bittersweet. Thank God for this Thanksgiving Day. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यहाँ पे हम आए हुए हैं। पासवो ऑर्गेनाइजेशन है लेडीज़ की, और यहाँ पे वो ग्रोसरी वगैरह और बहुत चीज़ें, कपड़े वगैरह सब कुछ बांट रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हर बुध के दिन वेडनेसडे को ये लोगों को ग्रोसरी वगैरह हर सब चीज़ें जो है ना वो ज़रूरतमंदों को देते हैं। तो इनसे आज इनकी जो चेयरमैन है पासवो, पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे पूछते हैं कि ये इनका क्या है। ये अतिया शहनाज जो हैं, ये हैं वो उसके चेयरमैन हैं, तो उनसे अभी बात करते हैं। ये अतिया बाजी हैं, ये पासवो की चेयरमैन है। तो इनसे पूछते हैं कि ये आज जो है इतना 300 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये क्या यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सलमान साहब। आपको पता है वैसे तो पिछले 2 साल से हर वेडनेसडे को हम करते हैं, लेकिन आज स्पेशल सेकंड मेगा थैंक्स गिविंग है पासवो की तरफ से। एज लाइक यूजुअल द फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई ग्रोसरीज, टूना फिश एंड स्पेशल आज विंटर क्लॉथ्स हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, स्पेशल टॉयलेट किट्स हैं जिसमें शैम्पू है, कंडीशनर है, टूथपेस्ट है, सोप है, और जो है आपकी तरफ से स्पेशल एफएनटी हेल्थ प्लान की तरफ से डिफरेंट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी के लिए हैं एंड थैंक यू सो मच। आपका भी आप आते हैं और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं पीछे लोगों का रश। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैं अभी लाइन दिखाता हूँ लोगों को कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन देखेंगे लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। लोग जो है ये लाइन में खड़े हैं। ये तकरीबन जिस तरह लाइन है दूर तक जा रही है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखें कितना लंबी लाइन है। ये लग ऐसा रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग होंगे। तो अभी आपको चीज़ें भी दिखाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें ये दे रहे हैं। तो नाज़रीन ये देखें, ये सारी ग्रोसरी है, यहाँ पे फूड है सारा मुख्तलिफ किस्म का, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ये सब कुछ यहाँ पे जो है ना, ये अब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इन्होंने अभी शुरू कर देना है। तो यहाँ पे ये लोगों को देंगे, और कल थैंक्स गिविंग भी है। तो ये देखें क्या क्या चीजें हैं। ये लोगों को फ्री चीजें दे रहे हैं, और जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे उन्हें। ये हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है ये फ्री और लो कास्ट होती है। ये देखें एफिनिटी बाय मोलिना हेल्थ केयर। ये हमारे रजा साहब हैं जो इकना के लिए काम करते हैं, एक इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इकना रिलीफ। बहुत अच्छा काम ये भी कर रहे हैं इकना वाले। ये भी ग्रोसरी वगैरह सब कुछ फ्री देते हैं, हर चीज़ फ्री देते हैं। तो अल्लाह ताला जज़ा इन्हें भी दे। ये देखें, ये जो है ये कुकीज़ हैं यहाँ पे। ये टॉयज हैं लोगों के, ये यहाँ पे पैकेट बने हुए हैं। इनमें टूथपेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, टूथब्रश है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं सारी इसमें लोगों की ज़रूरत की। ये खिलौने हैं, टॉयज हैं। ये फूड है, यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट है। ये यहाँ पे जो है वो कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े दे रहे हैं। ये कपड़े दे रहे हैं यहाँ पे, हुडीज वगैरह हैं। बड़ी लंबी जो है ये अपना बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, और लाइन भी बहुत लंबी है। ये देखें
Good. Look nice. You know. Sit. टोपी कहाँ? वो टोपियाँ भी ले गया। ओके। क्या ये देखें, ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, दूर तक देखते जाएं, लाइन ही लाइन, लोग ही खड़े हैं। लगता है कि 500 से ऊपर हैं। ये उनका पासवो वालों का बैनर है। ये सारी चीज़ें ये इस पे जो लिखी हुई हैं सब ये करते हैं। बंद कर रहा हूँ बार-बार। बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया मेरा। जी नाज़रीन देखें, ये शुरू हो गया है, लोग लेना शुरू कर दिए लोगों ने चीज़ें। ये वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत देर से लोग जो है ये 2 घंटे से लाइन में खड़े थे, तो अब जो है शुरू हो गया सारा काम। बिस्कुट दोगे ना लोगों को, ऐसे तो नहीं लोग देंगे ना, लोगों को हाथ में आओगे तो लोग लेंगे। चलो आप आगे जाओ। ये देखें, ये ग्रेप्स हैं, बनानाज हैं, वेजिटेबल्स हैं, शिमला की मिर्च, गोभी, ये अपना पाइन एप्पल, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सबको दे रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अपना कितना जो है वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया था, इकना के रजा साहब हैं, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इकना रिलीफ, ये दे रहे हैं सब, अपना अपने फ्लायर्स दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कम्युनिटी के लिए सब करते रहते हैं इकना वाले। पासवो ये सब जितने भी देखें, लाइन अभी तक कितनी लंबी लगी हुई है। ये देखते जाएं, चीज़ें लेते जा रहे हैं लोग। नहीं नहीं, गर्मी है कि सर्दी है? मेरे को है। ये देखें, ये अपना ये दे रहे हैं सब यहाँ पे चीजें हैं, सारी चीजें हैं। ये हमारे साथ हमारे साथ एक पीपल्स पार्टी अमेरिका यूएसए के सदर खालिद अवान साहब भी खड़े हैं यहाँ पे। ये भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इनसे अभी बात करेंगे, थोड़ा बिजी हैं वो, अभी बात करते हैं। तो अपना खालिद साहब, ये अपना खालिद अवान साहब, ये पीपल्स पार्टी के अमेरिका के सदर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये आज यहाँ पे आए हैं, लोगों की ये भी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो खालिद साहब बताएं जरा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अपना सलमान साहब, इट्स वंडरफुल। ये डॉक्टर अतिया हैं शनाज, इस पासो को रन करती हैं, और ये माशाल्लाह ऑल क्रेडिट गोज टू हर। हम तो उनको बस हेल्प करने के लिए, हेल्प आउट के लिए आए हैं। वंडरफुल जॉब। इससे कम्युनिटी के अंदर और अमेरिका के अंदर एक इमेज बिल्ड होता है कम्युनिटी का, और जो हमारे लिए जरूरी भी है। वी कॉल एज एम्बेसडर। तो फिर हमें इस तरह के काम करने बहुत जरूरी हैं, और बीइंग पीवीपी हम अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, आप भी कर रहे हैं इसको। तो हम अपनी कोशिश अपने हिस्सा डाल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मसाइल को खत्म करे। आमीन। अल्लाह ताला कबूल करे कोशिशों को। और ये भी इनका एक मजहबी त्यौहार है। बिल्कुल मजहबी त्यौहार है, बिल्कुल। कल थैंक्सगिविंग डे है, जबरदस्त त्यौहार, और हमारा काम है कि एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक हो, बिल्कुल। दिस इज वंडरफुल। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ वो न्यूयॉर्क के हमारे प्यारे प्यारे सदर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के न्यूयॉर्क स्टेट के सदर
जफर चट्टा साहब। तो ये कुछ खाने पीने पे लगे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे लगता है। इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं। हम मोहतरमा अतिया के प्रोग्राम है सारे, हम हमारे प्रेसिडेंट साहब, मैं, राजा परवेज साहब, जनाब सलेमान जफर साहब तशरीफ फरमा है और हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जफर साहब, आप भी तो माशाल्लाह हेल्प कर रहे हैं एक हाथ से। थैंक यू वेरी मच। हाँ बस थैंक यू फॉर सपोर्ट। यू वेलकम, यू वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम। जी नाज़रीन देखें, ये सारा चलता जा रहा है। अभी 300-400 से ज़्यादा लोग थे। अब लाइन यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो गई है, मगर ये कि बहुत अभी सामान बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे। वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट भी है, बहुत सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना रश है यहाँ पे। ये हमारे कैप्टन अदील हैं, बहुत काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। क्या क्या अदील भाई, क्या अपना आज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जी बस सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के, जो अच्छा काम हो रहा है कम्युनिटी के, उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि और भी लोग देख के अच्छा काम करें और ऐसे ही तंजीमों को सपोर्ट करें। आदिल राना साहब ये हैं NYPD में, पुलिस में यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, कैप्टन है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे हैं, इखलास भी इनका बहुत अच्छा है और काम भी बहुत कर रहे हैं कम्युनिटी। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। देखें ना, सब डिफरेंट किस्म के कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो सब हेल्प कर रहे हैं। देखते जाए कितना रश है, कितना रश है। कल थैंक्सगिविंग भी अब आ गया, तो उसके लिए लोगों को बड़ी हेल्प हो जाएगी। The women of PASWO, thank you for celebrating my birthday with me. My birthday was on Sunday, November 21st, and Atia never forgets. She always remembers just to reach out and to wish me well. And I wanted to come back to Brooklyn and come by and see all of the good work that continues to take place in the Pakistani American community. I knew that as we approach Thanksgiving, there will be an extra effort to feed those amongst us who are struggling to feed themselves. And true to form, PASWO has been out there feeding those in our communities who need to be fed and who need to have a wholesome meal so that they too can give thanks this time of year. And as you said, Atia, Thanksgiving is such a lovely, lovely word, but with it comes a meaning. And that is not only being thankful ourselves for life and all that Allah has provided, but being able to share those blessings with others around us and giving to others. And that's what Thanksgiving is truly about. So I am just happy to see that you continue to be a blessing to the people of our community, and that you took the time out to celebrate my birthday with me. Happy birthday. Happy birthday. Let me close by saying that, you know, we've had a very challenging time in Washington, D.C. We want to make sure that our families are made whole after all that we have experienced with the COVID-19 pandemic. And we did a number of things when President Joe Biden came into office. The first was the American Rescue Plan, because we wanted to make sure that those who are really, really, really just struggling, and in New York, we know we went through a really bad time because we were where the virus hit first in the north part of America. And we had no masks, we had no hand sanitizer. We didn't have anything to protect ourselves from a very contagious virus. And now that the Biden administration has come in, people are vaccinated, children are going back to school. We are providing resources to families directly so that their children can be fed and clothed, and that we can build a bridge to a more prosperous society.
And that's what the rescue plan was able to do. But we know that that's not enough, because we have reached a point in our country where we need to build a strong nation, a stronger nation. And part of that is making sure that our roads, our bridges, our tunnels are all modern day, that we convert and begin changing over the way that we use energy, because we know that the energy we currently use is tied directly to the change in climate that the world is experiencing. Yeah. And that change in climate has made it very dangerous for human life on our own planet. We have not been good stewards. And so this investment that we are making right now will be to mitigate the damages that we've already done, and hopefully leave for our children a more modern society that is respectful of the environment in which we live and in which they live. Because without that respect for our environment, we will be victims of what climate change can do. And we already saw with Hurricane Ida, so many right here in New York City were flooded out. Some people lost their lives in their own home. And we cannot allow that to progress and expand without doing everything we can to save human life and to build a resilient infrastructure. So that piece is coming. And in addition to that, we just passed in the House the Build Back Better Act, which is so very important, again, for our future. I look at my girlfriends there, 8 years old and 5 years old, and I had the blessing of being able to grow up in this neighborhood with all of the resources and support that I needed to be a healthy young girl growing into adulthood. We want to make sure that our children that are coming up in this generation have that same opportunity, and that all the resources, whether it's universal pre-K or childcare or opportunities for families to take care of their elders, that it doesn't cause a crisis economically for our families. And so we've created programs to help our families. My parents are 87 years old. 87 years old. And so I'm blessed to have them in my life, but I know as they grow older, they're gonna need support. They're gonna need help. And that's what we're able to do through Build Back Better. And there's so many other very important provisions. One of the things that you all know I've been really fighting for, and we're getting closer, and that's immigration reform. In this bill, what we are able to do is provide something called humanitarian parole. And that means that people who have been in the U.S. for many, many years, but don't have the documents, will be able to apply for this humanitarian parole, which gives them the ability to receive a work permit. And that will last for 5 years with an additional 5 years. Within that time, we must pass comprehensive immigration reform. We are protecting people now, but they need to be able to live out their full lives, their dreams, their aspirations. They need to be able to travel back home to visit with their families and be able to live a life out front and full building of our civil society. And I'm excited that that day is coming and that we are making sure that it happens. But this is a democracy. And the way in which we are able to make things happen to alleviate human suffering and to bring people into the fullness of being a part of America is by voting. By voting. Because it's a democracy. And a simple way of looking at it is, when we don't vote, we are allowing others to determine our destiny. When we do vote, we're taking the power of the democracy into our own hands to direct our own destiny. So I want to encourage everyone, every election, every single one, we must continue to go out and vote. The Pakistani American community makes the difference in every election. In every election.
And so we want to encourage everyone to continue to go out and make that difference. So to each and every one, this is the day before Thanksgiving where I'm giving thanks for the women of PASWO, Atia, and the relationship and the bond that we have built. And to all those who have supported this organization, many of the men in this room, let me thank you for seeing the value in what these women have put together and what it means for our community. It is a shining example that the rest of the nation can emulate in how we take care of one another. And let me just say once again, thank you, thank you, thank you for celebrating my birthday with me. Thank you, thank you. How are you? Thank you, my love. Who's in Pakistan? Yeah. Enjoy your Vice President Raila Aslam. miss you. Atia Vice President. Vice President. Raila. You know that? Thank you so much, Laila. So, can you have a seat for a little bit time? So, I'm going to thank the Saima Bhabhi. here. लगाओ ना कैंडल्स लगाओ ना स्टार्ट करो उसको To community. आप लगाएं जाके So, no, wait. So, I want to request, like, share your साइमा views भाभी on Thanksgiving. आप लगाइए कैंडल्स Thank you very much, Atia. To be here tonight is so special. I wouldn't miss it for anything, you know? That once a year and every week for the last year and a half, you've been out there in the community giving food and supplies and clothing and helping out the people overcome our crisis. I also want to congratulate the Congresswoman on her birthday. I know we're a day late, but birthdays are all the time. And the Congresswoman, who I've known for over a decade, has always been a model. And you said it right when you said that we emulate, that this community should be duplicated around the world, around America, where a community has always gotten along together. All cultures, all religions. And as we approach Thanksgiving, Thanksgiving is a holiday that transcends religion. It passes religion. It goes through everybody. We all celebrate Thanksgiving. Whether we're Christians, Jews, Muslims, Thanksgiving is a day of saying thank you to the Lord Almighty for giving us life, giving us health, and giving us blessing. So may we all be blessed with a happy and healthy year, and God bless all. Thank you, Atia. Thank you so much. I want to request one more person, Gottlieb Brian, please come. He sponsored today the prize to our kids. He's from the Port Shore. So please share your... Front shore. Thank you, Atia. Today truly is a blessing. As we get ready to celebrate Thanksgiving tomorrow and to be thankful for everything that we have, being able to join together and partner with PASWO and all the volunteers and everyone who helped put today's event together to give something to people who don't have, to help to be able to improve our community, to be able to give people who are going without food that they need to survive, and be able to give them something that they could rest upon in terms of having dignity and respect. And that's truly an honor and a blessing. And with everything that we all have, that's something that I'm truly most thankful for, being able to partner with PASWO, with Atia. So thank you for everything that you do and the organization does. And thank you to everybody who had a hand in putting today together. It truly is a wonderful and beautiful thing. Thank you. Thank you, Brian.